बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। Okay, now we are going to discuss programming perfectly. Programming perfectly. Already we know what is programming. Programming means conditioning. Programming means what? Conditioning. Conditioning means forming habits. When we talked about programming yourself to success, we have discussed these things. Programming means conditioning. Conditioning means forming habits. And today I tell you something more. Programming means conditioning. Conditioning means forming habits, or conditioning is all about forming habits, and it also means learning. It also means learning. Now let us discuss how to program perfectly, how to learn perfectly. In other words, programming perfectly or learning perfectly. Now you keep the subheading in your notebook. Learning perfectly. So either we talk about programming perfectly or learning perfectly, both are more or less same. Okay. So what is learning perfectly? What are the stages of learning? Stages. I will tell you with the help of an example. Before we go into that, we need to understand the meanings of some words. Like conscious means what? Conscious. Conscious means being aware. Conscious, please make a note. Being aware. Consciousness means hosh. In Urdu we say hosh mein rehna. Conscious means what? Being aware. So when you are aware of what is happening around you, you are conscious. Am I clear? When you are aware of what is happening around you, you are conscious. If you collapse to the ground, you become unconscious. Your eyes are closed. As if you are sleeping, you fell down, unconscious. Sometimes we see, isn't it, some people, they become unconscious. होश खो जाते वो लोग. होता कि नहीं होता? होश खो जाते. They become unconscious. Will they be aware of what is happening around them when they are unconscious? पता नहीं चलता वो लोगों को. They cannot know what is happening around them. Such a state is called as unconscious. So unconscious means not aware. When you are not aware of what is happening around you, we call it unconscious. Then I will tell you two more words. One is competence. Competence or competency means ability or expertise or the skill. In other words, skill. Skill. Competence or competency, CY, right, means what? Ability, skill. इसी से बना word competition. याद है competition? Isn't it? If you are more skillful, if you are an expert in that, you can get good score in the competition. You can perform well in the exam, in the competition, if you have more ability. Am I clear? So competency or competence means ability or the skill, right? Incompetence Incompetence means what? Now it is opposite. Like unconscious is opposite of conscious.
Incompetence is opposite of competence. Incompetence means not able, disability, or we can say not being able. When you are not skillful, when you are not skillful, when you are not skillful, right? What are you? You are incompetent in that matter. These things will become very clear with the help of example now. Now all of you first focus on what I am telling you. All of you please look at the board and listen to me carefully. Stages of learning. There are 4 stages of learning. How many? 4 stages are there. You tell them. Four stages of learning. Four stages of learning. First stage, unconscious incompetence. What is the first stage? Unconscious incompetence. What does it mean? For example, we all have crossed this stage 1. Suppose you were 2.5 years old. Your father or mother bought a new tricycle, small cycle for you to play with, right? So you are so small that you don't know what is it. First of all, you are not even aware of what is it, how to ride. अब साइकिल चलाना कैसे जानते थे क्या आप लोग? साइकिल चलाना कैसे? You don't even know that. You are not aware, unconscious. You are not aware. You understand? साइकिल चलाना बोले तो क्या? अब आप बोलेंगे 2 साल के बच्चे को, 2 years old, बेटा साइकिल चलाओ, will just look at you like this. क्या बोल रहे? Isn't it? What are you telling me? He cannot even understand, as if he is unconscious. He is not aware. That means what? He doesn't know. No knowledge, I can say. No K. Unconscious means what? No knowledge. उसको उसका इल्म नहीं है बच्चे को है इल्म है. किसे बोलते साइकिल चलाना? He cannot even understand that. Isn't it? And incompetence. ना उनको knowledge है, उस चीज़ का इल्म है, ना वो चला सकता है. क्या चला सकता है? नहीं. No ability. No knowledge. No ability. ये फर्स्ट स्टेज है. A for ability. उनके पास उसका इल्म नहीं है और एबिलिटी भी नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है. वो है फर्स्ट स्टेज, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. उसके बाद जैसे बच्चा बढ़ता रहता, एज टाइम पासेस ऑन, ही विल रीच द सेकेंड स्टेज. व्हाट इज इट? सेकेंड स्टेज क्या है वो? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. व्हाट डज इट मीन? साइकिल चलाना, कैसे चलाना समझ में आया. क्या करता आप? पहले साइकिल को पहले उल्टा कर देता, उल्टा कर दे के ही विल बी मूविंग द पेडल एंड द टायर विल बी मूविंग, विल बी प्लेइंग विद दैट. सब लोग खेले होंगे ऐसा. isn't it? मुझे चलाना नहीं आता, लेकिन चलता कैसे वो मालूम. I know how it happens. Isn't it? If my elder brother, मेरा बड़ा भाई है, मेरे से 2-3 साल बड़ा है, अगर वो चलाता है तो मैं देख के एंजॉय करता हूँ, खुश होता हूँ और समझ में आता है. I can understand, right? I have the knowledge है यहाँ. I have the knowledge as to how the cycle is moving forward. क्या करने से साइकिल सामने मूव होता है समझ में आता है. आता कि नहीं आता? एक स्टेज में समझ में आता. उसके बाद स्टिल मुझे आता नहीं, मैं अब तक बैठा नहीं उसके ऊपर. स्टिल आई डिड नॉट सिट ऑन द सीट एंड ट्राई माई सेल्फ. सो स्टिल नो एबिलिटी. मुझे समझ में आया बस. व्हाट इज राइडिंग आई नो, लेकिन मुझे खुद आता क्या? नहीं. मुझे नॉलेज है उसका, समझ में आया बस.
I have the knowledge of it, but I did not apply it. So I don't have the ability. उसके बाद बच्चा और बड़ा होता, तब क्या करता बच्चा? सीट पे क्या करता? बैठ जाता. He will sit on the seat and he will start doing it. Isn't it? Right? The third stage, conscious. What will happen? Guess. Conscious. जोर से बोलना. Conscious. Next. क्या Incompetent. स्टेज आता? नेक्स्ट स्टेज कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस आ जाता. ही विल बी एबल टू डू इट. कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. आप बच्चे के पास क्या है? नॉलेज है. ही हैज़ द नॉलेज एंड ही हैज़ द एबिलिटी. एबिलिटी भी आ गया आप. नाउ ही इज एबल टू राइड द ट्राईसाइकिल, टेक टर्निंग्स. Isn't it? चला रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है. Isn't it? Now he tells his mother, मामा मुझे देखो मैं कैसे चलाता हूँ. Isn't it? उनके अब्बा को बोलता, अम्मी को बोलता, बड़े भाई को बोलता, मुझे आ गया. Isn't it? And he enjoys. एक निवाला खाता, चले जाता साइकिल पे. भिस्से आता, भिस्से एक निवाला खाता, भिस्से चले जाता, फिरता रहता. Isn't it? He knows and he has the ability also. Isn't it? उसके बाद और एक स्टेज है. और एक स्टेज है, फोर्थ स्टेज. यू नो, फोर्थ स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट. अनकॉन्शियस. सुभान अल्लाह. ये देखो कैसा है, अनकॉन्शियस है फोर्थ स्टेज में. फिर और कॉम्पिटेंस. अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है. अब ये क्या है? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक. थिंग्स बिकम ऑटोमेटिक फॉर हिम नाउ. ऑटोमेटिक. अब ऐसा चलाता है साइकिल बच्चा, हाथ छोड़ के चलाता है. ही इज टेकिंग हिज फ्रेंड ऑल्सो ऑन द बाइक. नाउ ही मूव्स ऑन टू द बाइक राइडिंग. राइट? हिज फ्रेंड इज देयर एज द पिलियन राइडर. पीछे बैठ के है, दोनों जाते हैं बाइक पे, बातें कर लेते. दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. ही इज लीविंग हिज हैंड एंड वेविंग दैट हैंड टू वन फ्रेंड हु इज देयर इन द स्ट्रीट, शोइंग द पिलियन राइडर समथिंग ऑन द वे. ये देखो, वो देखो. इजंट इट? स्पीड ब्रेकर्स आते हैं. ही इज अप्लाइंग द ब्रेक्स. ही इज प्रेसिंग द हॉर्न. ही इज प्रेसिंग द क्लच. ही इज यूजिंग द क्लच, एक्सिलरेटर. किसी पे फोकस नहीं है अभी. ऑटोमेटिकली एज इफ यू नो दे हैव बिकम पार्ट ऑफ हिज बॉडी. तो देखते, वो चीज़ों को देखते, सोचते. इजंट इट? फोकस करते नहीं हो रही अब. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज नॉट लुकिंग एट द ब्रेक. ही इज नॉट लुकिंग एट द क्लच. ही इज नॉट लुकिंग एट द एक्सिलरेटर. ही इज नॉट लुकिंग एट द हॉर्न. ऑटोमेटिकली जाते हैं, सब कुछ चलता है. ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, क्लच शिफ्ट होता है, गियर शिफ्ट होता है, हॉर्न दबाता है, ब्लिंकर डालता है, लेफ्ट ले लेता है, ब्लिंकर डालता है, राइट लेके चले जाता है. एवरी टाइम इज ही लुकिंग एट द प्लेस ऑफ द बटन? नो. थिंग्स बिकम ऑटोमेटिक. ये कैसे हुआ? विथ मोर प्रैक्टिस. थिंग्स विल बिकम ऑटोमेटिक व्हेन यू डू मोर प्रैक्टिस. व्हेन यू डू मोर प्रैक्टिस, देन थिंग्स विल बिकम ऑटोमेटिक एंड यू विल रीच दिस स्टेज कॉल्ड एज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. तो इतना प्रैक्टिस करना है टू प्रोग्राम योर सेल्फ परफेक्टली, टू लर्न समथिंग परफेक्टली. प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन सच दैट थिंग्स बिकम ऑटोमेटिक फॉर यू. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल नमाज के अंदर हम लोग हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते. तो सूरह फातिहा में गलती होती हमारी. कभी सुने किसी आलिम की, किसी हाफिज की नमाज पढ़ाते वक्त सूरह फातिहा में गलती करना, पीछे वाले लुकमा देना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रुक गए, पीछे वाले बोले अर्रहमानिर रहीम. कभी नहीं होता ऐसा. क्यों नहीं होता रुमैसा? बिकॉज रीज़न क्या है? कैसे होगा ऑटोमेटिक? कैसे हो गया वो सूरह फातिहा ऑटोमेटिक? बिकॉज प्रैक्टिस. कैसे हुआ? बिकॉज कैसे?
Why we are not making any mistake in Surah Fatiha? 11. Because हर रकात में पढ़ते, नॉट जस्ट रोज पढ़ना, जनाजे की नमाज में भी सूरह फातिहा पढ़ते, नफिल नमाज में पढ़ते नहीं पढ़ते, सुन्नत में, फ़र्ज में, वितर में, तहज्जुद में, हर नमाज में, हर रकात में, इन एवरी यूनिट ऑफ प्रेयर योर नमाज इज इनकम्प्लीट विदाउट सूरह फातिहा। तो पढ़ 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 के डेली पढ़ते छे, आ गया फिर भी पढ़ते छे, हर नमाज़ें पढ़ते हैं, isn't it? Even if you take just फ़र्ज नमाज, हमारे फ़र्ज नमाज ले लो, फजर के 2, ज़ोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3, इशा के 4, कितने हुए? 6, 10, 13, 17 टाइम्स इन एवरी रकात वी आर रिसाइटिंग सूरह फातिहा। कितने बार हो गया? 17। अब सुन्नतों की भी पाबंदी है। कितने सुन्नतें हैं हमारे? कितने सुन्नतें हैं? फजर में 2 है सुन्नतें, ज़ोहर में 4 + 2, असर में कम से कम 2 पढ़ना अच्छा है, चलो कुछ भी नहीं पढ़े ठीक है। मगरिब में 2 सुन्नतें हैं, isn't it? 2, 4, 6, 8, 10, इशा में 2 सुन्नतें हैं, 12, isn't it? प्लस वितर में 3 रकात हैं, 1 रकात ही पढ़ सकते, चलो हम लोग 3 रकात पढ़ रहे हैं, ओके? तो कितने हो गए ये आके? 6, 10, 13, 17 + 3 ये वितर 20 + 12, 32 टाइम्स यू आर रिसाइटिंग सूरह फातिहा इन नमाज इटसेल्फ एवरी डे 32 टाइम्स। अगर आप तहज्जुद भी उठ के पढ़ते हैं, दूसरे नफिल नमाज भी पढ़ते हैं, तकरीबन 50-60 बार पढ़ते वैसे लोग, तो क्या होता? बार बार पढ़ 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 के इस राइट व्हाट हैपेंस? प्रोग्रामिंग परफेक्टली विल हैपन, यू विल लर्न इट परफेक्टली, इट विल बिकम ऑटोमेटिक। सूरह फातिहा पढ़ो बोले तो राइट, एज इफ यू नो आई एम प्रेसिंग द ट्रिगर एंड द बुलेट कम्स इमीडिएटली। सूरह फातिहा कम्स आउट ऑफ योर माउथ विदाउट एनी मिस्टेक। हमें क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरह इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग परफेक्टली, व्हाट यू शुड डू? Revise, practice, do it again and again, again and again. You must have seen in the cricket also. How many of you see cricket? Cricket में देखें, last ball 4 runs required, last ball 6 runs required, and the batsman comes forward for the pace bowler. डालने वाला बॉलर भी अच्छा बॉलर है, पेस बॉलर है, मशहूर बॉलर है, and he also doesn't want to lose the match, isn't it? ही delivers a tough delivery, टफ बॉल डालता वो भी, और ये बैट्समैन सामने आके with good footwork opens the blade of the bat, hits the ball into the boundary for a 6 and they win the match. Amazing, will get goosebumps, isn't it? उतना आसान नहीं है वो, जितना दिखता है ना आसान, उतना आसान नहीं है वो। It comes out of what? Practice, lot of practice. तो क्या करना है आफीफा? सूर्य भाई ना क्या करना है? प्रैक्टिस, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। आपकी सुन्नत नमाज़ों में पढ़ते रहिए, जो जो सूरह याद करना है उसको क्या करना है? सुन्नत नमाज़ों में पढ़ते रहना है, नफिल नमाज़ों में पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है। जिस सूरह को आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं अच्छी तरह, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, व्हाट वी शुड डू रिजवान? इन सुन्नत नमाज, इन नवाफिल एडिशनल प्रेयर्स वी शुड रिसाइट दो सूरास। अगर गलती आ गई नमाज होते ही फिर से क्या करना? वेरीफाई करना, बार 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 पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। जैसा सूरह फातिहा आपको हिफ्ज़ हो गया, इंशाअल्लाह पूरा कुरान वैसे ही हिफ्ज़ हो जाएगा। राइट, दिस इज़ हाउ वी कैन लर्न परफेक्टली, एंड देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग: अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। बहुत सारे लोग यहाँ तक आके रुक जाते, बहुत सारे लोग यहाँ तक आके रुक जाते। इसीलिए हर बार क्वेश्चन पूछे तो दे वेरीफाई द नोटबुक, क्वेश्चन पूछे तो दे लुक फॉर द बिस्किट। कौन तो बोलते कि अपड़ाते कि लुकमा देते कि बोल के, यू अंडरस्टैंड? यहाँ बैठ जाना, यू आर लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाना बोले तो यू हैव टू रीच दिस स्टेज, एंड यू कैन नॉट रीच दिस स्टेज
without more practice, without right practice and more practice. Without that, it cannot happen. May Allah grant us understanding. May Allah empower us. May Allah strengthen us. May Allah help us in reaching this stage called unconscious competence, also called as automatic stage, where things become easy for us, right? Ameen. May Allah forgive our sins. May Allah unite all of us in Jannatul Firdaus. Ameen. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alameen. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.